As the pandemic rages on for third year straight, unemployment woes continue to trouble the youth of the country. Traders across state are fearing another lockdown as to strip them of their gains made in the last year. Here's a detailed report. Another COVID wave has once again come to haunt the economy. Fears are rising that the economic gains made in the past few months may be reversed. This Omicron impact will largely be felt in the fourth quarter of the current fiscal. From that perspective, obviously the fourth quarter GDP growth will be impacted. We are expecting that it may actually drop to 5.7%. Traders say another lockdown will spell doom, and its immediate fallout will be the loss of jobs. प्रशासन भी चिंतित है, शासन भी चिंतित है और इसी तरीके से व्यापारी भी चिंतित है, क्योंकि आने वाला जो हमारे 2 बार का लॉकडाउन लगा, इसमें व्यापारी पूर्ण रूप से टूट चुका है। अगर एक बार वो कोरोना काल लग जाता है और एक बार फिर से लॉकडाउन लग जाता है तो हम व्यापारियों की स्थिति 10 से 72 हो जाएगी और अधिकांश दुकानें बंद होने की कगार पे आ जाएगी। एक व्यापारी तो अपना कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर भी लेता है, बाकी लेबर नहीं कर पाती, क्योंकि लेबर एक व्यापार से ही उसका पूरा दारोमदार है। The Center for Monitoring Indian Economy has said the writing is already on the wall. The urban unemployment rate rose to 9.3% in December from 8.2% the previous month, and rural joblessness rate went up to 7.3% from 6.4% in November. The unemployment figures of December was a 4-month high, the CMIE said. Rajasthan is among many states which is facing the brunt of people not having jobs. एमकॉम तक की पढ़ाई कर ली, एमकॉम फाइनल, और मैंने 2019 के अंदर फार्म भरा था, जिसका 2019 में अप्रूवल हो गया, वो वेरीफाई हो गया था, तो अप्रूवल अभी तक तो नहीं हुआ। अब अप्रूवल होने में ये साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाती हैं। Abhay has master's degree but no job. Even the home guards rejected him. He applied for unemployment benefits in 2019 but is yet to receive it. मैंने एमए फाइनल कर रखा है एजुकेशन में। कोई एग्जाम दे रहे हो? एग्जाम अभी होम गार्ड का दिया था मैंने, होम गार्ड का एग्जाम नहीं, उसका फिजिकल लगा था। एमए करने के बाद होम गार्ड का एग्जाम दे रहे हो? वो तो फॉर्म तो लगा दिया था, अगर हो जाए तो। With the rise in COVID cases, marketplaces across the country are wearing a deserted look. Most of the shops have their shutters down. Now this is impacting the economy, and we are seeing the unemployment numbers rise many-fold. It now depends on the government on what policies they take. Whatever policies the government takes, the end result will depend on that. Traders, however, feel whatever economic recovery the country made over the past few months, all those recoveries will now be reversed because we are seeing the beginning of a third wave. This is Aishwarya Paliwal reporting for India Today with camera person Abhishek.